Good morning, everyone. Can you hear me? Thank you Good for morning, ma'am. responding. Good I morning, hope ma'am. I'm Good clear. morning, ma'am. Ma'am. Good morning, everyone. Apurva, Satakshi, Pradeep, Pratik, Kumkum, Aditya, Ankush, everyone. Very good morning. I hope I'm very audible and clear. Yes, Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. थैंक यू. सो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं इंडियन सिनेरियो में, साथ ही में वर्ल्ड सिनेरियो वाइज किस तरह से एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितने एम्पलीट्यूड में रिक्वायर्ड है. वी हैव ऑल डिस्कस्ड कि किस तरह से ट्रेंड्स चेंज हुए. 1973 में क्या था एंड देन लेटर ऑन किस तरह से डिमांड्स बढ़ती गई, कौन से मेजर सोर्सेज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं. वी हैव सीन ऑल दोज रेशियोज. मैंने सब आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या रिमेंबर करना आपको ज़रूरी है. उसके बाद हम लोगों ने देखा लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होता है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. नाउ देयर आर वेरियस फॉर्म्स जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है पावर प्लांट्स में. आई गिव यू अ स्नैपशॉट अबाउट हाउ द पावर प्लांट वर्क्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. देन वी टुक अ व्यू अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे यूज़ की जाती है, कहाँ कहाँ पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, एंड बेसिकली वहाँ पर जो पावर प्लांट का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं. एंड देन वी सॉ अ केस स्टडी जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक इंसिडेंट था दैट वाज कॉल्ड द चेर्नोबिल डिजास्टर. बेसिकली एक पावर प्लांट था बाय द नेम चेर्नोबिल इन यूक्रेन, जहाँ पर चेन रिएक्शन हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द सराउंडिंग एरिया. उसका एक हम लोगों ने छोटा सा डॉक्यूमेंट्री देखी थी. कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री नहीं, लेकिन इट वाज sufficient to give you an idea about what happened when it happened. So जब भी आपको केस स्टडी पूछी जाती है आपको डेट, टाइम एंड थोड़े डिटेल्स देने होते हैं कि क्या हुआ था उस इंसिडेंट में एंड इम्पैक्ट्स क्या थे. यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है. आज हम कवर करेंगे हाइड्रो एनर्जी. नाउ देयर आर टू टॉपिक्स टू बी कवर्ड. वन इज हाइड्रो पावर, द अदर इज हाइड्रोजन एनर्जी. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स. हाइड्रोजन वो होता है जहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस को यूज़ कर रहे हैं, उसे हम हाइड्रोजन पावर कहते हैं. हाइड्रो पावर वो होता है जहाँ पे हम वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. सो बेसिक आइडिया आपकी क्या है हाइड्रो पावर को लेके? कैन एनीबडी टेल हाउ हाइड्रो पावर यूजेस और जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी? हाइड्रो पावर में यस, generates electricity through the water. राइट राइट विकास. वाटर Storing को यूज़ the करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. एब्सोल्युटली राइट. इसके अलावा थोड़ा सी डिटेल में कोई और ऐड कर सकता है कि वाटर ma'am. हम with कैसे? pressure. यस, Ma'am, these power plants are situated near dams, राइट, especially. एब्सोल्युटली राइट अपूर्वा. हम एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम डैम्स यूज़ करके वाटर को यूज़ कर, मतलब उसका जो फ्लो है वो थोड़ा सा रीडायरेक्ट करते हैं. दैट कैन बी डन. द अदर थिंग इज कि केवल हम जो फ्लोइंग रिवर है उसमें से थोड़ा सा वाटर रीडायरेक्ट करें इंस्टेड ऑफ अ डैम. डैम इज बेसिकली अ रिजर्वॉयर जहाँ से हम वाटर को उसकी काइनेटिक एनर्जी, फ्लोइंग वाटर की एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. सो विल हैव अ लुक स्पेशली कि हाइड्रो पावर जो वाटर फ्लो हो रहा है वो कैसे हम यूज़ कर रहे हैं फॉर पावर जनरेशन इन अ हाइड्रो पावर प्लांट. Hydropower. इज द वॉइस कमिंग? सिस्टम की वॉइस आ रही है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड. Hydropower or hydroelectricity refers to the conversion of energy from flowing water into electricity. बेसिकली जो वाटर फ्लो हो रहा है उसे हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. It is considered a renewable energy source because the water cycle is constantly renewed. वाई इट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल? बिकॉज हम जो भी हमारा वाटर है उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसको डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं. उस डायरेक्शन चेंज के हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. एंड वाटर इन इटसेल्फ जो साइकिल होती है अर्थ पे, ऑटोमेटिकली वाटर सर्कुलेट होता रहता है. दैट इज़ वाई इट इज़ रिन्यूएबल. by the sun. One of the first uses of hydro energy तो सबसे पहला प्रिमिटिव जो था हाइड्रो पावर को यूज़ किया जा रहा था गेहूं को पीसने के लिए, गेहूं या कोई भी ग्रेन को पीसने के लिए
इन दिस फॉर्म ऑफ मिल्स यूज किया जा रहा था. Was for mechanical milling, such as grinding grains. But today, modern hydro plants produce electricity using turbines आज की डेट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, इन दैट केस हम टर्बाइंस यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर दैट इज हेल्पिंग द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. and generators. The mechanical energy created by moving बेसिकली वाटर जब आता है इट फॉल्स अपॉन दिस टर्बाइन, और जिसकी वजह से टर्बाइंस के ब्लेड्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए थे, फाइन ब्लेड्स होते हैं फैंस की तरह. जब वाटर उस टर्बाइन के ऊपर आता है देन दोस टर्बाइन ब्लेड्स कीप ऑन रोटेटिंग, और जब ये टर्बाइन रोटेट होता है इसके साथ जनरेटर कनेक्टेड है, तो जनरेटर के मूवमेंट से अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मूव करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. और डेफिनेटली वी नो दिस कि डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होती है या एयर की ज़्यादा होती है. डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, एयर की ज्यादा होगी या वाटर की ज्यादा होगी? water, Right. वाटर की. एब्सोल्युटली वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, दैट मींस वाटर में ज्यादा क्षमता है इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इंटेंसिटी की प्रोड्यूस करने की. तो यही हम कर रहे हैं यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं. water spins rotors on a turbine. This turbine is connected to an electromagnetic generator which produces electricity when the turbine spins. There are Now there are two options. One is with the help of a dam, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. डैम बेसिकली क्या होता है, रिवर के अक्रॉस हम एक बड़ा सा इस तरह से स्ट्रक्चर बना देते हैं जो वाटर का फ्लो ब्लॉक करेगा, नॉट एग्जैक्टली स्टॉप करेगा, इट विल ब्लॉक टू सम एक्सटेंट. और फिर यहाँ से हम ये जो एक पाइप जैसा दिख रहा है आपको, दैट दिस इज कॉल्ड अ पेन स्टॉक. तो पेन स्टॉक से वाटर को फोर्सफुली भेजा जाता है यहाँ से टर्बाइन पर. मतलब जो हाइट डिफरेंस है, यहाँ पे वाटर ऊपर है, दिस इज बेसिकली रेजर्वायर. रेजर्वायर क्या होता है, जहाँ पे वाटर हम स्टोर करते हैं. डैम इज ऑल्सो यूज फॉर वाटर सप्लाई. वाटर सप्लाई में भी यूज किया जाता है डैम, बट वो डिटेल्स अलग हो जाएंगे. दैट मीन टाइम जब भी आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक आएगा इनटू फ्लूइड मैकेनिक्स या वाटर सप्लाई से रिलेटेड, तब हम डिस्कस करेंगे. बट एज ऑफ नाउ आप ये समझिए कि डैम क्या करता है, बेसिकली वाटर को स्टोर करता है. जो वाटर स्टोर्ड रहता है उसको ये फोर्सफुली इस पेन स्टॉक से, क्योंकि एरिया घट गई, तो एरिया घटने की वजह से क्या होगा, वाटर जो फ्लो करेगा वो प्रेशर से फ्लो करेगा. तो दिस वाटर विल फ्लो विद द प्रेशर टू दिस टर्बाइन, और जब ये टर्बाइन के ऊपर फॉल करेगा वाटर, देन दैट केस इट विल स्टार्ट मूविंग. जैसे फैन मूव करता है वैसे उसी तरह से मूव करने लगेगा ये टर्बाइन, एंड देन इट विल लीड टू द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिसे अगेन ट्रांसफार्मर से स्टेप अप किया जाएगा, एंड देन इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड देन ट्रांसफर्ड विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसफरिंग सिस्टम्स. तो इस तरह से ये वाटर जो रहता है इसे हम केवल फ्लो जो है उसका रीडायरेक्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट कंज्यूमिंग इट. दिस इज वन ऑप्शन जो यूजुअली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में किया जा रहा है. द अदर ऑप्शन इज, अगर हम इस तरह से ये जो रिवर है इसका जो वाटर का फ्लो है, दिस इज अ नॉर्मल फ्लो ऑफ द रिवर. अगर हमने इसका फ्लो का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने कुछ स्मॉल कैपेसिटी की टर्बाइंस लगा दी, देन इन दैट केस अगेन पावर कैन बी जनरेटेड. अब इसमें एडवांटेज ये क्या है कि हम वाटर को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं. जैसे डैम में क्या कंस्ट्रक्शन बड़ा सा हो गया, बहुत ज़्यादा ह्यूज एरिया चाहिए, साथ ही में जो उसके सराउंडिंग एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ भी डिस्प्लेस हो जाती है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ह्यूज टाइप ऑफ डैम्स. बट इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगती है, एरिया भी ज़्यादा लगती है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा लग रहे हैं. अगर हम इस तरह का ऑप्शन लेते हैं, देन इन दैट केस अगेन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड, बट डेफिनेटली जितना अमाउंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है उतना यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाएगा. वी विल बी सीइंग सम minute differences and details in the coming videos. Two main types of hydroelectricity production, dams and run-of-river. Hydro dams utilize the potential energy from dammed water to produce electricity. जो potential energy रहती है water में, that is converted into the kinetic energy. Kinetic energy because of this flow आएगा, और इस kinetic energy को हम utilize करेंगे electricity generation के लिए. A dam is a large barrier constructed to raise the level of water and control its flow. The elevation created by the dam creates gravitational force for turning the turbine when water is released. Some dams also contain an additional reservoir at their base where water is stored to be pumped to the higher reservoir for release when electricity is in demand. This is referred to as pumped storage hydro. The second form of hydroelectricity production is run-of-river hydro. Run-of-river still uses turbines and generators, but relies on natural water flow rates of rivers
diverting just a portion of the water through turbines. इस केस में because we are not constructing a dam, we totally rely upon the flow of the water into this river and simply हम जो direction of flow है उससे थोड़ा सा add up करेंगे एक channel that can be used. That means जो natural river है उसका course हम disturb नहीं कर रहे हैं जो dam में हो रहा था. Because run-of-river hydro is subject to natural water variability, it is more intermittent than dammed hydro. इसकी वजह से क्या होता है कि इसका continuous power generation नहीं होता है. Sometimes होगा, sometimes नहीं होगा because we are not storing it into a specific area. So that is why it is intermittent. There are various sizes of hydro plants that produce electricity. Now dams भी रहते हैं, वो different capacities के रहते हैं, and depending upon the capacities they are classified as small, medium, micro and so on. Large hydro, greater than 30 megawatts. 30 मेगावाट से ज़्यादा रहेगा तो large hydro power plant कहलाएगा. Small hydro, 100 kilowatts to 30 ranging from 100 kilowatts to 30 megawatts. and micro hydro, less than 100 kilowatts. Micro, which can generate electricity less than 100 kilowatts. The Hoover Dam in the United States is a whopping 2,074 megawatts. So this is an example of a dam in United States that has the capacity of approximately 2,074 megawatts. Which is enough to serve 1.3 million people. Of all renewable energy sources, hydropower holds the largest share of worldwide electricity production. ये चीज़ तो हम लोगों ने already देखी है कि electricity production में hydropower significant role play कर रहा है present scenario में भी. Hydropower has several benefits. It is a cost-competitive form of electricity, even though the initial cost ज़्यादा है installation का, जो हम dam बना रहे हैं उसका cost ज़्यादा होगा. But other than that, for coming 50 years, उसके अलावा उसका कोई बहुत ज़्यादा major costing नहीं रहता है, इसीलिए उसे cost competitive कहा गया है. building cost can be high. It is quite reliable compared to other renewable forms of energy. ये reliable रहता है because water जो हम store कर रहे हैं dams में, that has sufficient power generation capacity. renewable options and pairs well with other sources as it can be. The third is the base load power. Base load power basically क्या होता है कि हमारे requirements जो रहती हैं वो change होती जाती हैं. कई बार हमें electricity ज़्यादा required है, कई बार हमें कम required है. For example जैसे festival season होता है. Festival season में हम ज़्यादा electricity consumption करते हैं और जबकि other seasons में हमारा उतना नहीं होता है. The other thing can be जैसे summer आ गया. Summer के समय हम लोगों का electricity consumption ज़्यादा हो जाता है as compared to other seasons. So what happens कि जब हमारा requirement change हो जाता है तब उस हिसाब से हमको electricity production भी change करना पड़ता है. उसे कहते हैं base load power. That means requirement के हिसाब से हमारा electricity production अगर ज़्यादा हो रही है requirement तो बढ़ना भी चाहिए. So that can be dealt with this type of hydropower plants. Used as base load power. In some cases, dammed reservoirs can also help with flood. Some cases में वो flood control करने में भी help होता है dams, but certain cases it might lead to a flooding as well. Flood control and be a reliable water supply for communities. मैंने आपको ये बताया था कि वाटर सप्लाई के लिए भी डैम्स यूज किए जाते हैं. रिजर्वॉयर्स जो है वो वाटर सप्लाई के लिए भी यूज किए जाते हैं. तो डैम इज बेसिकली अ टाइप ऑफ रिजर्वॉयर जिसको हम वाटर सप्लाई में भी यूज कर रहे हैं. सो इट हैज ड्यूअल बेनिफिट्स कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी काम आएगा, साथ ही में वाटर सप्लाई में भी वो हेल्प करेगा. There are also some concerns with hydropower, especially when it comes to large dams. Damming a river has a major impact on the. But in case of dams, it has definitely certain impacts on the surrounding area. क्योंकि डैम बना देते हैं तो उसकी वजह से there is a probability that it might lead to a flooding situation as well as जो marine life है यहाँ पर, water की जो life है वो change हो जाती है. Local environment, changing wildlife habitats, blocking fish passage. Fishes का pathway block हो जाता है. And often forcing people in riverside communities to move out of their homes. So In addition, certain dam cases में क्या failure होता है कि डैम बनाने की वजह से जो आसपास रह रहे हैं उनका भी home displacement हो जाता है. can be catastrophic, claiming. And as I already told you, certain cases में क्या होता है कि अगर डैम का malfunctioning हो गया या कुछ crack आ गया तो उसकी वजह से there is a probability of flooding. The lives of those living downstream. Hydro plants are also not completely free of greenhouse gas emissions.
एंड एज सच ग्रीन हाउस गैसेज एमिट तो नहीं हो रहे हैं वर्किंग में, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन रहता है उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं। क्यों? क्योंकि जो हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की वजह से इट एड्स अप टू द ग्रीन हाउस गैसेज। As with most forms of energy, carbon dioxide emissions happen during construction, particularly due to the large quantities of cement used, and plant matter in the flooded areas makes methane, another greenhouse gas, as it decays underwater. That's अंडर वाटर hydropower. प्लांट्स भी मीथेन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इट माइट आल्सो ऐड अप टू दिस ग्रीन हाउस गैसेस। So this was a simple explanation about how hydropower जो रहता है उसे हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। Now one new thing which I wanted to have a look is this, जो मैंने अभी बताया आपको कि हम क्या करते हैं, one is a dam, the other is हम river का जो flow है वो redirect कर सकते हैं through a turbine that can help in the generation of electricity. So हम उसका एक देख लेते हैं example. This is a whirlpool turbine. Whirlpool turbine बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी रिवर है उसका हम जैसे अभी मैंने बताया जो पाथवे है वाटर का सिर्फ थोड़ा सा हम चेंज करेंगे ताकि वो इस तरह की टर्बाइन से पास हो सके, एंड दिस विल नॉट लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वाटर, बट डेफिनेटली कैपेसिटी जो है वो वेरी करेगी। So this is an example of a whirlpool turbine जिसमें एक sufficient housing colony को हम power supply कर सकते हैं with the help of these types of turbines. Sufficient energy मिलती है 24 hours a day के लिए, but only to a selected group of people. एक बेल्जियन कंपनी ने इसे टर्बुलेंट नाम दिया है। मोस्ट रिवर्स और कैनाल्स में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं without disturbing the flow of water. Simply we need to make a channel into that river. The rural areas जहाँ पर हम there is a less probability of constructing a dam. Certain areas ऐसी भी होती है जहाँ पे हम dams construct नहीं कर सकते because it requires a lot of area. Then in that case क्या होता है, हम इस तरह का एक टर्बाइन यूज कर सकते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। But let's see how it works exactly. तो जैसे आप देख रहे हैं दिस इज अ रिवर, रिवर के पास में ही एक चैनल बना दिया जाएगा बाय डिगिंग द लैंड, एंड देन यहाँ पर बेसिन इंस्टॉल कर दिया जाता है जिसके ऊपर ये टर्बाइन फिट की जाती है, देन जनरेटर इज अटैच्ड टू इट, देन अगेन इट इज रिफिल किया जाता है गैप। यहाँ से वॉल्स ओपन करने के बाद क्या होता है, इट गोज इनटू दिस एरिया, then again if we open the walls water flows with pressure, ultimately it enters the turbine, the turbine के blades move होने लगते हैं because of this water flow. Sufficient energy generate होता है, continuous energy generate होता है because इसका we don't need huge amount of water, साथ ही में एरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है। Only moving part is this turbine that keeps on rotating, उसका थोड़ा सा maintenance करना है, otherwise it is relatively less costly. Installation easier है, one week पूरा construction हो जाता है। But then I told you there's a difference, जो dam रहता है उसका power production बहुत ज़्यादा रहता है, ये जो रहेगा although it will not affect the fishes and other marine life, बहुत सारा benefits है इसके, but then इसकी जो capacity रहेगी power generation इतनी high नहीं रहेगी compared to the hydroelectric power dam based.
next. So small scale electricity production के लिए इसे sufficiently यूज कर सकते हैं. Rural areas में इसे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे डैम बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे अच्छी तरह से इसे हम एम्प्लॉय कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा सके. So I have a couple of visuals. If you want, we can go into details कि किस तरह से ये whirlpool turbine work करता है. The third thing I wanted to see you, this is a micro turbine. There are different types of categories: large, depending upon the capacity, large hydropower plant, small hydropower plant, and then micro. This is the smallest power generation device that can be used. किसी भी स्ट्रीम में लगा के पावर जनरेट किया जा सकता है. कैपेसिटी इन सब की वेरी करेगी. जितना ज़्यादा बड़ा चीज़ होगा उतनी ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी होगी. जितना साइज स्मॉल होता जाएगा उतनी कैपेसिटी उसकी वेरी करती जाएगी. बट देन हर जगह वी कैन नॉट अफोर्ड डैम, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट एरिया, जिसकी वजह से दिस इज अनदर ऑप्शन जिसको केवल स्ट्रीम में लगाने से लाइटिंग की जो फैसिलिटी है वो सफिशिएंटली प्रोवाइड कर सकते हैं. It's not just the lights that brighten our city streets at night. Electric power is so essential today, it's hard to imagine life without it. Electricity is produced by a number of methods, one of them being hydroelectric generation. Conventionally, a dam is built to hold a large reservoir of water. The energy created by water falling from high to low levels turns the blades of a turbine. This rotates a generator to produce electricity. This is the commercial scale exploitation of water which is done in the hydropower plant. Recently, there's been a growing interest in smaller scale methods. But जो अभी हम देख रहे हैं, that is a small scale production of electricity using water. Using slight differences in the levels of flowing water. Underneath this bridge over a river in Tokyo, a small-scale hydroelectric generator has been installed. Although the water... ये जो example दिखा रहे हैं, there is a bridge in Tokyo, जिसका example बताया गया है इस visual में कि यहाँ पे एक small scale hydroelectric power plant है जो basically electricity generate करने के लिए use किया जा रहा है. That is installed under the bridge. The drop is just 1 meter. This generates enough power to light the bridge. बट ये उतना ही पावर जनरेट कर सकता है कि इस ब्रिज को लाइट करने में हेल्प कर सके. Ena is a city in Gifu in central Japan. So this is the place where this researcher has worked, Ena, in Japan. तो वहाँ पे उन्होंने इन्वेंट किया है ये स्मॉल स्केल जो हम अभी देखने वाले हैं डिवाइस जो स्ट्रीम्स में रखने से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. Masaya Sumino, an engineer at a metalworking factory here, has developed a revolutionary water power generator that's gaining international attention. This is Sumino's ultra-small water power generator. A 1 meter by 28 centimeter. 1 meter की यूनिट है, 28 सेंटीमीटर की विड्थ है. उसी के अंदर उसने एक टर्बाइन जनरेटर लगाया है that simply locates. अगर हम छोटी सी स्ट्रीम में भी लगा दें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है इतना कि लाइटिंग हो सके. Meter casing encloses the spiral blades of the turbine. All flowing water has energy, and I always thought it was a shame that we weren't fully using this resource. That's what inspired me to come up with this concept for utilizing unused energy from nature. Weighing just 18 kilograms, this is the first ever generator of its kind that can be easily carried by one person. It's already being used in roadside irrigation channels to power street lights and for electrifying fences to protect farmland. To spread his message about water power, Sumino often gives presentations to primary school children like these. Today, he'll show them how to generate electricity from a small river in their school grounds.
Okay, now I'm going to put it in the water. His generator works even with the gentle flow of this tiny stream. The spiral blades are angled, so they rise slightly towards the upstream side. A 15-centimetre high metal plate blocks the stream. This makes the water run over the top of the plate and flow down through the spiral blades. Because of this particular design and this angle and then this length जहाँ तक water force किया जाता है, water फिर इस blade से pass करेगा and it causes the rotation of these blades, जिसके help से electricity generate की जा सकती है. The force of the water on the blades turns the turbine to generate electricity. This concept works anywhere there's flowing water, even if it's very shallow. Three, two, one, now! That was amazing. Such a small machine and it made electricity. In Japan, schools are often used as evacuation shelters during disasters. This device could provide emergency power. Sumino's generator promises to transform life in remote areas of the world that still lack power. There are many places where individuals or whole areas have no access to electricity. If we can provide them with the means to make their own power, they'll be able to change their lives. That's my hope. An ultra-small generator Wherever we that want could provide... development, we need power. बिना power के development नहीं हो सकती है. It is not possible at all. So there are a number of examples जिसे हम देख सकते हैं. जैसे this is again a micro hydropower. To just give you a glimpse कि कैसे this particular form can be used.
Did you observe and can you tell me कि आपने क्या देखा? What did you see in this visual? Yes? दिखा आपको समझ में आया कि क्या चल रहा था यहाँ पर? क्या किया गया? तुम देख रहे हो कि नहीं? Yes, anybody respond कि क्या किया गया इस विजुअल में? सिंपल क्या आपने देखा वो बता दीजिए. मैम वाटर स्ट्रीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट. राइट, वाटर स्ट्रीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया. क्या किया उस पर्सन ने? उसने सिर्फ एक पाइप से उस वाटर को रीडायरेक्ट किया. उस पाइप में एक छोटी सी डिवाइस फिट की. दैट वाज अ वॉल्व डिवाइस. वॉल्व देखा आपने कि वॉल्व घूम रहा था. वॉल्व चालू कर ओपन करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, देन वॉल्व क्लोज करने से इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जा रही थी. सो सिंपली बाय यूजिंग द फ्लो ऑफ वाटर there is possibility to light up, क्योंकि आज की डेट में we have a number of options like these LED based bulbs and tubes जो relatively lesser power पे भी work कर सकते हैं. तो इस तरह का जो पाइप था उसमें एक वॉल्व जनरेटर उसने लगा दिया, very small generator, but it has the capacity to power up the lighting. तो और भी बहुत सारे इनोवेटिव डिवाइसेस हैं जिसे हम देख सकते हैं, जैसे we'll see water lily. So we'll see a visual of this water lily. The water doesn't need to be very deep, nor the current very strong. Only enough for the small rotor blade to float free in the water. Its inventors say Blue Freedom is the world's smallest hydroelectric power plant. It takes just minutes to assemble. This is a very small hydroelectric sort of power plant. Power plant तो बोलना उसके लिए मतलब it is a small device that can use water and generate electricity in any area, but I told you definitely the capacity goes on varying. Once placed into moving water, the turbine transfers the energy to a mini generator in the shape of a ring. The ring जो then रिंग है उसमें एक स्मॉल जनरेटर लगा हुआ है जिसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, एंड प्रैक्टिकली दिस कैन बी kept into any flowing water. just needs to be secured on a stick nearby. The electricity is stored in batteries. It certainly looks easy enough. It is easy. You just need a stick and you're away. And there you have your mini hydropower plant. The advantage is that you can take it anywhere. Anytime I need electricity, I get out my Blue Freedom and generate whatever I need. With a river, it's very easy because the density of the water is 1,000 times greater than that of air. So you can keep the equipment really small and still have immense power. That's the beauty of it. The idea comes from the German state of Bavaria and isn't only popular with hikers and fans of the great. This was a glimpse about this practically portable water generator. It is also known by the name of water lily. If you search it, you will get it. Another thing that was regarding water. दूसरा हम जो waves रहती है, you know what are waves? Waves are coming in the oceans. So अगर हम waves की energy use कर सके, then we can have another form of resources जिसमें हम electricity generate कर सकते हैं without disturbing the ocean. Ocean पे तो tremendous flow होता है, high tide. This ocean produces जैसे waves इतने कितने shallow right बढ़ने लगते हैं.
Ma'am, your voice is not coming properly. Now is it clear? Yes, ma'am, now clear. So what will happen अगर हम इस तरह का वेव एम्पलीफायर लगाएंगे तब उस केस में क्या होगा कि जो वेव है उसकी हाइट हम बढ़ा सकते हैं. जब हम हाइट बढ़ा सकते हैं then in that case they can be used for electricity generation. What this wave amplifier is doing, it is increasing the height of these waves. जैसे ये move कर रहा है, simple device है, but इस अपने movement से ये heights increase कर सकता है waves की. Then with the help of this type of device जो move करेगा waves के flow के हिसाब से, then these types of ये लगा रहता है ball sort of thing, which is then moving. With the help of this movement, this generator will rotate and that will help in electricity generation. Another device that can help in power supply without using any resources. Simply simple installation करेगा, but then because it is water environment, then there might be some corrosion or maintenance problem of this device. Other than that, कुछ बहुत ज़्यादा investment की ज़रूरत नहीं रहती है. So we need a wave amplifier, we need a wave power harvester, and then we need a storage device जिसके help से फिर हम sufficient power generate कर सकते हैं into the oceans as well. So this was regarding how we can use the ocean energy in the form of wave power. One more thing, another device जिससे हम this is a specific device जिसमें अगेन जो वेव जनरेट हो रही है ओशंस में उसे हम यूज़ कर सकते हैं. जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वाटर में उसको एम्प्लॉय करके दीज आर कॉल्ड फ्लोट्स अप एंड डाउन मूव करेंगे. इनके अप एंड डाउन मूवमेंट से क्या होगा, यहाँ पर जो जनरेशन होगा इट विल बी अटैच्ड टू अ जनरेटर एंड दैट विल कॉज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. Because of this, there is continuous power generation day, night, every time, because waves keep on moving all the time, irrespective of the day or night time. जिसकी वजह से continuous power generation की possibility and we have a smooth power. This is probably the future जिसमें oceans को use करके भी electricity generate की जा सकती है. One stage will be having around 20 floats of 10 meters diameter. Or every power station of these floats can produce 6 megawatts of electricity.
one machine like this can power for 4,000 houses. So coming to the other form, that is a tidal energy. Tidal energy होती क्या है basically? What are tides actually? Tides क्या होती हैं? सुना है आपने टाइड डिटर्जेंट नहीं? टाइड्स जो ओशंस में आती हैं या बे रीजन्स में आती हैं, what are that? High tide, low tide. Ma'am, tides are actually caused due to moon. Right, exactly. Generally. Very good. So, who was this? Ma'am, myself Apurva. Apurva. Yes, you're absolutely right, Apurva. जो मून रहता है उससे इन्फ्लुएंस होती है टाइड्स, एंड हाई टाइड तब होती है जब मून पीक पे रहेगा, when it will go to the full moon side, और फिर जब मून लो होता जाता है then it goes towards the lower tide. Tide is basically the water level जो चेंज हो रही है बे रीजन में, उससे हम यूज़ कर सकते हैं अगेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. वी विल हैव अ ग्लिम्स कि कैसे यूज़ किया जाता है उसे. That is called as tidal power. Tidal power. Tidal power is a form of hydropower that converts the energy from the natural rise and fall of the tides into electricity. Tides are caused by the combined Tides मून के रोटेशन की वजह से, साथ ही में सन के इन्फ्लुएंस की वजह से कॉज हो रही है अर्थ पर. effects of gravitational forces exerted by the moon, the sun, and the rotation of the earth. Tidal plants can only be installed along coastlines. So only in the Bay region. Bay region basically क्या होता है, जहाँ पे 3 sides of land होता है and 1 side of water होता है, वहाँ पे हम इस तरह की tides को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए. Coastlines often experience too high tides and too low tides on a daily basis. The difference in water levels must be at least 5 meters high to produce electricity. The difference जो रहेगा वाटर लेवल में at least 5 meters का होना चाहिए, जिसे हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. So only in that area जहाँ पे डिफरेंस रहेगा, वहीं पे हम इस तरह के टाइडल एनर्जी को यूज कर सकते हैं. Tidal electricity can be created from several technologies, the main ones On being a broad basis there are 3 technologies जो जिससे हम टाइड्स को यूज कर सकते हैं. One is the barrage, tidal barrage जिसे कहते हैं. Then another is this sort of vertical turbines जिसे हम यूज कर सकते हैं. Third is a sort of wind turbine. जैसे आपने wind देखोगे, wind turbine के बड़े-बड़े blades होते हैं, उसी तरह का एक underwater turbine होता है. So this is the basic 3 technologies जिससे हम tidal region में वाटर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. tidal barrages, tidal fences, and tidal turbines. So these are the basic barrages, fences and turbines. Tidal barrages are the most efficient tidal energy sources. कमर्शियली इससे ही ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिसमें एक ब्रिज जैसा बना रहता है, बैरेज बोलते हैं उसको, जिसमें अगेन बिलो दैट ब्रिज वी हैव अ सेक्शन एरिया जहाँ पे टर्बाइंस होती हैं. तो जैसे ही अब होगा क्या, हाई टाइड में क्या होता है कि यहाँ पर जो आउटर लेवल में रहेगा वाटर बढ़ा हुआ रहेगा और इनर लेवल में कम रहेगा. सो उससे क्या होगा, वाटर जो रहेगा फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल रश करेगा, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स द इनर साइड, एंड दैट इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ दीज टर्बाइंस. जबकि लो टाइड में रिवर्स हो जाएगा. लो टाइड में क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर रहेगा वो कम हो जाएगा, जब इनर रीजन में, इस बैरेज के इनर रीजन में यहाँ पे वाटर लेवल हाई रहेगी. सो क्या करेगा, वाटर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. वाटर विल फ्लो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जिसकी वजह से अगेन दैट विल हेल्प इन द rotation of these turbines. A tidal barrage is a dam that utilizes the potential energy generated by the change in height between high and low tides. This energy turns a turbine or compresses air, which in turn creates level change हो रही है, कभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, that is causing the movement of this turbine. electricity. Tidal fences are turbines that operate like giant turnstiles, whereas tidal So fences is simply vertical sort of turbines रहती है जो water के movement से rotate होती है. turbines are similar to wind turbines, only underwater. These are similar to wind turbines. In both cases, electricity is generated when the mechanical energy of tidal currents turns turbines connected to a generator.
The generator produces electricity. Everywhere the concept is same. We need a turbine. With it the generator is connected. The generator जब ये blades move करते हैं turbine के तो generator में movement होने की वजह से electromagnets की there is production of power. Ocean currents generate relatively more energy than air currents because ocean water is 832 times more dense than air and therefore applies greater force on the turbines. Tidal power is easy to install and renewable, having no direct greenhouse gas emissions and a low environmental impact. Because the ocean's tidal patterns are well understood, tidal energy is a very predictable energy source, making it highly attractive for electrical grid management. This sets it apart from other renewables that can be more unpredictable. However, adoption of tidal technologies has been slow, and so far the amount of power generated using tidal power plants is very small. This is due largely to the very specific site requirements necessary to produce tidal electricity. So I told you tidal energy कुछ specific locations पर ही use की जा सकती है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा commercially well established नहीं है हर जगह पर. Additionally, tide cycles do not always match the daily consumption pattern. Another problem is कि जो tides रहती हैं और जो requirement रहती है हमारी कई समय में match नहीं करती. मतलब हमें जब ज़्यादा power चाहिए तभी ज़रूरी नहीं है कि high tide ही हो. तब उस केस में there is a problem. Of electricity and therefore do not provide sufficient capacity to satisfy demand. That's tidal power. This was regarding tidal power. Then another various number of options are there, but majorly we have seen. One thing regarding water energy I also wanted to discuss, that was ocean thermal energy conversion. तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो अंडर वाटर जो हमने देखा टाइडल टर्बाइन्स जो रहती हैं वो कैसी होती हैं. There is a platform and then platform के ऊपर ही जो wings रहते हैं, wings are submersible, water के अंदर भी जा सकते हैं, then they can be brought at top also. ऊपर से देखेंगे तो this just looks like a tower which is immersed into this water, and then when we go down you will see that underwater wind turbines जैसा ही है इसका structure. So these are submersible sort of turbines जो फैंस की तरह ब्लेड होते हैं. जब वाटर मूव करेगा तब ये रोटेट करते हैं और जब रोटेट होते हैं तब उसके साथ एक जनरेटर है. इसी के पीछे एक जनरेटर लगा हुआ है. तो जनरेटर मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. So this can move in both the directions. This can move clockwise. This can also move anti-clockwise depending upon the flow of water. Anti-clockwise भी मूव कर सकते हैं. बट समटाइम्स क्या होता है कि जो ये वेव्स रहती हैं दैट माइट बी टर्बुलेंट, उस केस में क्या करेंगे, देयर माइट बी अ डैमेज टू दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स जिसके कारण इसे हम ऊपर लेके आ सकते हैं अबव द वाटर लेवल. सो दिस कैन बी मूव्ड अप, ये ऊपर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ विच अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है देन दैट कैन बी प्रिवेंटेड टू डैमेज. जो डैमेज रहेगा उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम बाय ब्रिंगिंग इट अबव द वाटर लेवल. And if it might require some maintenance, that can also be done by bringing it up. This is the basic structure of a water turbine, tidal turbine, जिसे हम use कर सकते हैं for exploiting tidal energy. I've already told you tidal power क्या होता है. You've seen that. One form we are seeing will be ocean thermal energy conversion. That is OTEC. Without water, life would not exist on Earth. 70% of the Earth's surface is covered by water. We know this कि अर्थ की जो सरफेस रहती है वो 70% वाटर से कवर्ड है. 97 इस जितना भी 70% वाटर है अर्थ पे उसमें से मेजॉरिटी क्या है, जो भी 70% वाटर है हमारे अर्थ पे उसको किस फॉर्म में अवेलेबल है मेजरली. आवाज आ रही है आपको मेरी? जो हमारा अर्थ पर 70% वाटर है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है. लेक्स है, रिवर्स है, सी है, Mostly oceans. यस.
मोस्टली ओशन वाटर के फॉर्म में है। जो भी हमारा 70% वाटर है अर्थ पर, अर्थ इज कवर्ड बाय 70% ऑफ वाटर। जो हमारा 70% वाटर है इस अर्थ पर, उसमें से 97% of the water that is available on earth, उसका 97% is in the form of sea and ocean। अब sea and ocean में प्रॉब्लम क्या होता है? वाटर कैसा होता है sea और ocean में? नॉन ड्रिंकेबल। नॉट ड्रिंकेबल, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इस सॉल्ट कंटेंट की वजह से एक ऐसा बेनिफिट है जो हम वाटर में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ टेम्परेचर डिफरेंस। वी विल सी हाउ इट इज़ यूज्ड। 1.4% of which is ocean water. Due to the ocean's salinity, or salt content, it was once believed it was mostly unusable for drinking, agriculture, or industry. However, the ocean's waters store 1,000 times more heat than the व्हाट इज द डिफरेंस? जो ओशन में, क्योंकि हमारे पास सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है हमारे पास उस वाटर में, तो उसमें हीट स्टोर करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द अदर सोर्सेज। तो सेंट्रल रीजन, ये जो इक्वेटर रीजन रहता है, वहाँ पे जो वाटर रहता है वो रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर पर रहता है एज कम्पेयर टू द पोलर रीजन्स। Because of this variation in salt content, there is difference in temperature of these ocean water. atmosphere. More than 300 times the Earth's electrical needs are in the solar power contained in the upper layers of the tropical ocean. This heat is distributed around the Earth by thermohaline circulation, a virtual conveyor belt of water driven by temperature, wind, and the Earth's rotation. जो वाटर फ्लो हो रहा है, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर वेरिएशन। हीट किससे कहाँ से ट्रांसफर होती है? फ्रॉम हाई टू लो ट्रांसफर होती है। सिमिलर जो हॉट वाटर रहता है वो ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? हॉट वाटर लाइट होता है कि डेंस होता है? लाइट। हॉट वाटर लाइट होता है, गुड। तो हॉट वाटर जो लाइट होता है वो ऊपर रहता है या नीचे रहता है? मैम ऊपर रहता है। डेफिनेटली जो हॉट वाटर रहेगा, क्योंकि लाइट होगा, वो ऊपर रहेगा, और जो कोल्ड वाटर रहेगा वो डेंस रहेगा, तो वो नीचे रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, जिसकी वजह से देयर इज अ वाटर करंट दैट इज जनरेटेड इनटू दिस ओशंस। Surface water at the equator is heated by the tropical sun. इक्वेटर में क्या हो रहा है कि वाटर जो है रिलेटिवली वार्म हो रहा है, इसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। Trade winds created by the same heating effect push this surface water from the Gulf of Mexico towards northern Europe, also known as the Gulf Stream. As the hot upper layer of water moves away, Because warm water जो है वो लाइट है, वो ऊपर राइज कर रहा है, and it is moving because of the wind's current, then that is leading to a specific pattern of water flow into this Gulf region. from the equator, it cools and evaporates. Water freezes towards the pole. So warm water राइज कर रहा है, ऊपर रीजन में फ्लो कर रहा है, then it is reaching at a particular area जहाँ पे वो दोबारा cool down होगा, and then it will come back. And what's left is very heavy, cold, dense water. यहाँ पे जाके वो अपनी हीट एमिट कर रहा है, ठंडा हो जा रहा है, and then it is coming back down because definitely cold water is dense, तो वो deep में चला जाता है। This cold, dense water sinks to the ocean floor, pushing its way to the equator, along the east coast of North and South America, and then into Antarctica. This process is referred to as deep water formation. इस प्रोसेस को, जहाँ पे वार्म वाटर ऊपर जा रहा है, it is flowing to a particular region, heat emit कर रहा है, it is becoming cold and dense, it is going down and then again coming back. This particular process को कहते हैं deep water formation. This deep water is pushed out into the Indian and Pacific Oceans, where fresh rainwater dilutes the warming water as it rises. Winds and the Earth's rotation push the water back into the Atlantic. इस तरह से जो पैटर्न मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से वाटर करंट्स हो रहे हैं। Where it began. The dark blue indicates the certain area जहाँ पे हमारे पास ये दोनों वाटर अवेलेबल है, warm region as well as cold region. At that place we can use this form of energy that is called as ocean thermal energy conversion. Deepest parts of the ocean, where the coldest water flows. This is especially true of the Atlantic basin, while the hottest water lies on the surface along the equator.
A few places where this very cold and very hot water is readily accessible to land is near the coast of southeast Puerto Rico. So here we are discussing the example of Puerto Rico area, जहाँ पर दोनों ही type of waters available है, warm water as well as very cold water. So this temperature difference into water can be used. At Punta Tuna, less than 2 miles from the shore, ocean depths drop to more than 3,000 feet deep here. Deep enough to access the cold 40-degree water just below the hot 80-degree water necessary for ocean thermal electric conversion. This is ocean thermal electric conversion or energy conversion device that is using the difference of temperature into the ocean waters. Or OTEC. OTEC uses this continuously renewing energy to generate electricity without oil, coal, natural gas, or any other fuel. OTEC only needs the temperature difference between the... What we require is only the temperature difference. केवल हमें hot water और cold water के बीच का temperature difference चाहिए, जिससे यूज करके हम electricity generate कर सकते हैं. Hot surface water and cold deep water of the... Basic principle क्या है कि जो hot water है relatively warm रहता है. If we can use a liquid that has a boiling point, very low boiling point rather, तो उससे क्या होगा, वो कम टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट हो जाएगा. तो हम हॉट वाटर को लेते हैं, उससे ये लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड को यहाँ पर इवेपोरेट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोपेन लिया गया है, तो इस वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड को लिया हमने, जो कंपेरेटिवली वार्म कंडीशंस में ही इवेपोरेट होने लगेगा. इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम. स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम से ये टर्बाइंस रोटेट होने लगेंगी, and then again that will be condensed using this deep cold water. तो basically जो temperature difference है water का, वो ही हम use कर रहे हैं इस तरह की device में, which is called as OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion Device. The ocean. Ocean thermal electric conversion takes the hot surface water and uses it to boil another liquid, like propane, which has a very low boiling point. This is the temperature at which a liquid becomes a gas. This is the same propane used in our ovens and outdoor grills, only it is never burned. The boiling propane instead turns a turbine that generates the electricity, which is carried to land. So you can see यहाँ पे evaporation हो रहा है, it is getting converted into steam, then the steam will be redirected to the turbine. And through an underwater cable. A pipe is used to reach the deep... Once this turbine rotates, there will be electricity generation. Cold water, which is pumped up and used to cool and condense the propane. Deep cold water के help से दोबारा इस steam को condense किया जाता है, and again it forms liquid, and then this cycle keeps on repeating. Back to liquid form. This simple system is installed in an all-weather hurricane-proof floating platform that also holds the 30-foot diameter pipe that is used to reach the deep cold water. A single 100 megawatt floating plant can generate over 800 million kilowatt. एक single जो रहता है installation, it can generate 800 megawatts of electricity. Of electrical energy. 40 such floating plants could satisfy all of the current electrical needs. So simply what they are doing is they are simply using the temperature difference of this ocean, with the help of which electricity can be generated. No device, हमें बहुत ज़्यादा specific device की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा installations की ज़रूरत नहीं है, and इस तरह के simple plants जो रहते हैं जहाँ पर भी ये difference रहेगा, temperature difference into this water of ocean, can be successfully installed and used for electricity generation. To Puerto Rico forever, without purchasing any more oil, coal, or gas for electrical generation. So this was an explanation by NASA. This is well turbine. Let's see. One concept for harnessing the wave energy is the oscillating water column principle. The power takeoff for this technology is typically an air turbine. The most commonly used air turbine for this application is the Wells turbine, which we will explain in this episode. The water level in the chamber form that is called the well turbine rises and falls with the rhythm of the waves and act as a piston.
Well turbine is basically an air turbine. Air turbine क्या कर रही है? It is forcing the air into this particular region. ये एक तरह का well बना दिया जाता है जिसमें sufficient area रखी गई है जहाँ की air flow कर सके. जैसे water level change होगा वैसे ही यहाँ से air push होगी towards the outside, and if water level goes down then the outside air is pushed towards the inside. तो इस air के flow से क्या हो रहा है? यहाँ पे turbine rotation होगा and that can be used for electricity production. The air is forced forwards and backwards through the turbine and causes the rotation of the turbine. तो यहाँ पे हम water तो practically use ही नहीं कर रहे हैं, we are simply using an air turbine. This generates mechanical energy that is converted into electricity by a generator. The Wells turbine has a special feature: it always rotates in the same direction, regardless of which direction the airflow comes from. In any direction, air किसी भी direction में flow होगा, ये turbine एक ही direction में rotate होगा. How is this possible? This is feasible because of the symmetrical shape of the rotor blades. Because of the specific design of these blades, irrespective कि किस direction में airflow हो रहा है, हम एक ही direction में rotation करवा सकते हैं इस turbine को. As the air hits the rotor blade, most of the flow is deflected in one direction and pushes the blade in the opposite direction. Due to the symmetrical shape of the rotor blades, the same effect happens when the airflow comes from the other direction. Therefore, this Wells turbine always rotates in one direction, regardless of the air. Because of this specific design of these blades, air upwards flow होगी या downward flow होगी, it doesn't matter. जो rotation रहेगा वो एक ही direction में रहेगा. Airflow direction and guarantees the continuous rotation of the turbine. The Wells turbine must be turned on initially. The airflow alone does not get it to rotate. The problem is in initial rotation के लिए ज़रूरत है because जो simple airflow है उससे वो start up नहीं होगा. This turbine is one of the simplest turbines for wave energy conversion. It has very few moving parts. None of them are in the water, need no gearboxes. So none of the parts in the water, because water में क्या होता है, अगर water में parts रहेंगे तो then there is probability of corrosion and maintenance, which I told you कि अब तक जो भी devices बनी हैं उसमें water में immersed रहती है जिसकी वजह से corrosion maintenance की दिक्कत आती है because salty water can damage the device more. Easy to maintain and achieves an efficiency between 40 and 70%. तो This turbine was efficient है इस तरह की turbines, and because it is not immersed into water, comparatively maintenance जो रहता है वो घट जाता है. tested in several research plants under real conditions. Limpet. The power plant on the Isle of Isla was the first commercial plant in operation between the year 2000 and 2018. It generated 500 kilowatts with. So simply by two well turbines of this type of जो हमने अभी discuss किया, air flowing turbines, 500 kilowatts of electricity can be easily generated. Two Wells turbines. First था UK में install किया गया था in Scotland. The Mutriku breakwater wave plant in Bay of Biscay. Then another area जहाँ पे 16 well turbines को use करके 296 kilowatts की electricity generate की गई थी, that was in Spain. On the coast of the Basque Country in Spain, started in 2011. It has 16 Wells turbines and supplies 250 households with energy. The Wells turbine has the most operational experience and running hours of all air turbines for oscillating water column concept of harnessing the wave energy, and it makes a small contribution to the generation of sustainable energy. So these are the latest things we will discuss here. I've tried to cover as much different types of devices that are used in water. Innovations keep coming on every time, so there is no end to such innovations. But जो latest था और forms मैंने आपसे discuss किए. I hope the topic was clear, and I hope you got all different types of ideas. एक तो hydropower plant कैसे work करता है, different types of hydropower plants, large, small, medium, micro, ये सारी चीजें दिखाई मैंने आपको. We discussed this whirlpool sort of turbine जिसमें without obstructing the flow of river हम कैसे use कर सकते हैं water को for electricity generation. Then we saw this ultra small hydroelectric power generation device जिससे हम electricity generate कर सकते हैं to light up a particular area. Then we saw this small, very small device again that can be
सिंपली फिटेड इनटू अ पाइप, जिसको पाइप में हम फिट कर सकते हैं और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है टू सपोर्ट बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स। देन भी सो कि वेव एनर्जी जो रहती है उसे कैसे यूज़ की जाती है। यहाँ पर हमने देखा कि जो भी वेव्स रहती हैं उसे एम्पलीफाई करके देन वहाँ पर एक वेव हार्नेसिंग डिवाइस होती है जिससे यूज़ किया जा सकता है। देन अनदर दिस फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग स्टेशंस देखे हम लोगों ने, जिसमें बिकॉज ऑफ दिस वेव मूवमेंट अगेन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। देन वी सर्च टाइडल एनर्जी, जिसमें टाइड्स जो रहती हैं उसे यूज़ करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में इन द थ्री फॉर्म्स। वन इज द बैरेज, दूसरा फेंस होता है, एंड द थर्ड इज अ टर्बाइन। देन आई ऑल्सो शोड यू दैट हाउ these underwater turbines work। एंड देन हमने देखा कि पोर्टेबल डिवाइसेस जो आजकल इनोवेट की जा रही हैं दे कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। Rainwater also can be used for electricity generation. That was one more example जो आप देख सकते हैं। And then we discussed these specific commercial OTEC devices, ocean thermal energy conversion device, वो कैसे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल देखा हम लोगों ने, एडवांटेजेस देखे हमने। And then we saw this latest well turbines, जिसमें basically water यूज किए बगैर एयर टर्बाइंस हेल्प कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। सो दिस इज द लेटेस्ट फॉर्म जिसमें प्रैक्टिकली जो टेक्निकल इश्यूज आती हैं, मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी सॉल्व की जा सकती हैं यूजिंग दिस एयर टाइप ऑफ टर्बाइंस, जो कि इन सारे स्ट्रक्चर्स में नहीं थी। दीज आर ऑल वाटर बेस्ड टर्बाइंस जो वाटर में इमर्स्ड थी। दिस इज इनोवेटिव अप्रोच जिसमें एयर का फ्लो कंट्रोल करके रेगुलेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, but still it is water based only the turbine is air। so far I hope आज के टॉपिक्स आपको क्लियर हैं और इसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स, ये सारी हम लोगों ने डिस्कस की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। so we will be continuing with the similar topics. We have certain topics to be covered till here, so after this coming lecture में हम कंटिन्यू करेंगे with similar topics। If you have any doubt, you can tell me। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. So I Yes, try to ma'am. keep it illustrative। मैं कोशिश की करती हूँ। बाकी रीडिंग मटेरियल तो मैंने आपको बताया, I will be telling you regarding reading material and other things, but at least आप कंसेप्ट समझते जाइए। So time for attendance। आशीष, आदित्य, प्रेजेंट मैम। आदित्य प्रेजेंट है? यस मैम। अंकुश, एंड मैम। अंश, प्रेजेंट मैम। अंशुमन, अपूर्व, Yes, ma'am. मैम अंशुमन प्रेजेंट मैम, रोल नंबर 5। देख लिया मैंने। आर्यन, असगिर, प्रेजेंट मैम। आशुतोष, अथर्व, आयुष, यस मैम। आयुष ठाकुर, बादल, भरत, भूमिका, Present, ma'am. चेतन, यस मैम। दीपक, दीपेंद्र, दिनकर, फरहान, प्रेजेंट मैम। गर्व, खुशरीन, हर्ष, हेमंत, यस मैम। हिमांशु,
Yes, ma'am. Present, ma'am. Hitesh, Present, ma'am. Khushi, Present, ma'am. Kuldeep, Present, ma'am. Kumkum, मैम वो प्रेजेंट है, उसका माइक ऑन नहीं हो रहा है। Manjri, Present, ma'am. Mohammad Dilshad, Mohit, Present, ma'am. Nitesh, Parth, Parth Yadav, Pawan, Pooja, Pradeep, Present, ma'am. Pratik, Priyanka, Ritik, Sawan, प्रेजेंट मैम। Shadab, Satakshi, Yes, ma'am. Sheikh Mohammed, Shivam, Shubham, Siddhant, Siddharth, Present, ma'am. Tanish, Tushar, Umesh, Urvashi. Present, ma'am. Umesh is present. Urvashi, Yes, ma'am. Present, ma'am. Vaibhav, Vijay, Vikas, Vikas Rathi, Present, ma'am. Vikramaditya, Vishal, Vivek, Yash, Present, ma'am. Yogesh, Zakwan. मैम Yes, please. मैम प्रियंका की लगा दो मैम 42। Priyanka. और कोई छूट गया है? So far आप लोगों को समझ में आ रहा है? कंसेप्ट से देखो कुछ Yes, पता ma'am. होंगे आपको, मैटर पता होना चाहिए कैसे लिखना है। बेसिक आइडिया है इसकी, जो भी फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वन, हाउ इट वर्क्स आपको पता होना चाहिए। सेकंड, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस और इम्पैक्ट्स क्या हैं। ये बेसिक आइडिया है आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। कमर्शियली वेल एस्टैब्लिश्ड टेक्निक्स तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि कमर्शियली, जैसे हमने आज डिस्कस किया कि हाइड्रो पावर प्लांट्स कैसे वर्क करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि इट्स वर्किंग, हाउ इट इज़ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ ब्रॉडर बेसिस। जैसे अगर आपको बोला जाता है तो आप एक एटलीस्ट एक ब्लॉक डायग्राम बना सको कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। एंड देन आपको ये भी बताना है कि जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस एंड इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, देयर माइट बी सर्टेन इम्पैक्ट्स जो होंगे। तो ये बेसिक आइडिया है जो आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के पता होने चाहिए। वी आर नॉट गोइंग अ लॉट इनटू द टेक्निकल डिटेल्स बिकॉज दिस इज एन ओवरव्यू सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट जिसमें आपको मेजर इश्यूज पता होना चाहिए। So first unit is related to electricity generation, power requirements and different forms of energy क्या क्या use होती है for sufficiently fulfilling these types of requirements. So some certain forms are also remaining जो हम लोग continue करेंगे in the coming lectures. If you have any doubt या आपको दिक्कत आ रही समझने में, please let me know so that I can modify according to your requirements. So I'm hoping कि आप लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही हो एंड आई ट्राई टू कीप इट एज मच सिंपल एज पॉसिबल। लेट मी नो एट एनी टाइम इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे, वी विल बी मीटिंग इन कमिंग लेक्चर्स एंड थैंक यू फॉर नाउ। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.